Hello friends, I am Professor Singla. Today I am going to discuss on the very important topic, that is COPO attainment. So first of all friends, we have to understand the concept that earlier the teaching was basically teacher centered, right? So now there is a paradigm shift from teacher centered to the learner centered. And we need to measure the learning acquired by the students, right? So in this context, so I will discuss the today's topic, that is COPO attainment in the outcome based education, right? So outcome based education, as I have told, that earlier the teaching was teacher centered, but now it is shifted to the learner centered. For example, a teacher has delivered a 40-minute lecture, right? So after attending that 40 minute of session, what the student could acquire, so that basically matters a lot. And there are various methods to calculate that learning. In the same way, for example, a teacher takes the course for a semester. So what is the course outcome of that particular course which the teacher has taught to the students for the whole semester, right? So in this way, this topic is of very much importance, and let us understand some more insights of the topic. So topic is CO and PO attainment in outcome-based education. So I am, as I have mentioned, I am Professor Manoj Kumar Singla. So first of all, we need to understand what is outcome-based education, right? So outcome-based education is like what the student could attain after attending a particular session or after attending a particular course for one semester. So let us first discuss about the course outcomes, right? As we have to study the COPO attainment in this session, so we should be familiarized with the term course outcome. What is the meaning of the course outcome? So before proceeding further, let me tell you, there are a few terms. One is a program, another is the course, right? So what is program? So program means, for example, student is undergoing BE mechanical engineering, right? So this is one program. Another student is undergoing BE electrical engineering, that is another program, right? And every program must have some 30 to 40 courses of different credits, which contributes to total of 160 or more credits, right? So every subject is basically known as the course. So what do you mean by the course outcomes? So course outcome, by definition, if we move, what the student should be able to do at the end of the course, that is the course outcome, right? So like if we take the example of one course, let us say it is a physics for engineer and it is a 3-credit course, right? So 1 credit means 15 hours, 12 to 15 hours. So it means if it is a 3-credit course, so student must have attended 36 to 45 lectures. So what the student could be able to do after attending 36 to 45 lectures of the course physics for engineers. So it is an effective ability including attributes, skills, and knowledge to successfully carry out the identified activity, right? So most important aspect of CO should be observable and measurable. So let us take the example of the CO attainment, right?
So let us say this is one course, physics for engineers, and we have written the 4 or 5 course outcomes corresponding to the course contents of the physics for engineers, following the Bloom's taxonomy. So what is Bloom's taxonomy? That also I will explain, or let me tell you. So this is Bloom's taxonomy, basically chart, right? So here I have shown the different levels. Level 1 is of remember, level 2 is of understanding, level 3 is of applying, level 4 is analyze, level 5 is evaluate, level 6 is create. So basically it is based upon the name of the inventor. So Bloom has basically identified this taxonomy. So in the light of this Bloom's taxonomy, we used to write the course outcomes, right? And before knowing much about the course outcome, we should also understand that how the course syllabi is framed. So course syllabi is framed based upon the input of various stakeholders. So who will be the stakeholder? So stakeholder will be the industry, right? The people from the academia, the alumni, right? And other persons involved in it, right? So once the syllabus is formed, so we will, in the light of Bloom's taxonomy, we will formulate 5 or 6 outcomes, right? So like after undergoing the complete syllabus contents, what the student will be able to acquire, or what the student will be able to do, right? So like the first course outcome I have mentioned here, it is quote the basic fundamental concepts of laser, optical fiber, crystallography, ultrasonic. So it means course outcome 1 is of level 1. In the same way, for second course outcome, demonstrate working of various lasers, fiber, components, semiconductor devices, explain the behavior of crystalline solids, quantum and nanoscale system. This is the course outcome 2, right? So similarly, course outcome 3, solve the problem. So this basically comes corresponding to the level 3 application, right? So in the same way, course outcome number 4 and 5 has been written, taking into care of the Bloom's taxonomy levels, level 1 to level 6. And let me tell you, say, let us say a student is undergoing BE electrical engineering, and under that he has to study approximately 40 courses. So this doesn't mean that every course will cover all the levels, level 1 to level 6. It is not possible, right? So generally, to reach at level 6, it is basically, this could happen in project-based subjects. Like for example, there is a subject related to some designing of the electrical engineering parts, right? So in that, we can say that the student will be able to create something, right? If we could do some new innovation, we could make some prototype for the societal use, right? So then next term is the program outcome, right? So course outcome, by now you might have understood, that is the basically after undergoing the syllabi of the course, what the student will be able to do, right? Means जैसे मैंने बताया कि 3 क्रेडिट का कोर्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग लेटर से स्टूडेंट ने 45 लेक्चर्स अटेंड किए, तो आपको 45 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद स्टूडेंट क्या कर सकता है, उसकी नॉलेज में क्या इजाफा हुआ कि वो ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है.
So now coming to the program outcomes. So program outcomes, as I have mentioned, say what is the meaning of program? Program means BE electrical engineering is one program. So what the student become capable of at the end of the program, right? It means, let us say, if the student is doing the BE electrical engineering 4-year degree program, what he or she will be able to do after the end of the program, after the completion of the 4-year degree program, after acquiring the knowledge of tentatively 40 subjects of different credits during those 4-year degree program, right? So POs are 12 in number, and it is defined by National Board of Accreditation. And these 12 POs are applicable to all the undergraduate engineering programs. So what are those program outcomes? So let us have a look on the 12 program outcomes. So like first program outcome is engineering knowledge, right? Problem analysis is PO2, design and development of solutions, conduct of investigation of complex problems, modern tool uses, engineering and society, environment and sustainability, ethics, individual and teamwork, communication, project management and finance, lifelong learning. So meaning क्या हुआ कि let us say BE electrical engineering program student is undergoing. So corresponding to that program, NBA has defined the 12 program outcomes. Means उसको ये 12 program outcomes in 4-year degree program through different courses attain करने, ठीक है? So ऐसा नहीं पॉसिबल कि कोई एक कोर्स में ही वो 12 के 12 प्रोग्राम आउटकम्स अचीव कर ले. That is not possible. But by undergoing the different subjects, right? किसी में वो इंजीनियरिंग नॉलेज, प्रॉब्लम एनालिसिस, डिजाइन करेगा, किसी में वो मॉडर्न टूल यूजेस करेगा, किसी में वो कम्युनिकेशन करेगा, किसी में वो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसेस मेंटेन कैसे करने हैं वो सीखेगा बच्चा, right? So in this way, by undergoing the different courses, student will be able to acquire the knowledge corresponding to all the 12 program outcomes. So this is COPO mapping table for the subject physics for engineers. So in this table, basically on left hand side, first column, I have written CO1, CO2, CO3, CO4 and CO5. And along x-axis, you can say I have written all the 12 POs, right? So अब इसमें ये आपको मैपिंग करनी है. मैपिंग का मतलब क्या है कि जो CO, लेट अस से CO1 अगर PO1 से 100% मैच करता है, ठीक है? So CO1 क्या था? बेसिक नॉलेज of different modules of the physics, है ना? तो PO1 क्या था? इंजीनियरिंग नॉलेज. तो यस, CO1 PO1 से 100% मैच करता है, तो हम यहाँ पे वेट इसको 3 का दे देंगे. सिमिलरली CO1 PO6 क्या था हमारा? PO6 was engineering and society. Let us understand what was CO1. CO1 was basic fundamental concepts of laser optical fibers, right? तो ये जो है CO1, ये पार्शली मैच करता था PO6 से, तो इसलिए हमने इसको वेट 2 दे दिया. सिमिलरली PO5 क्या है? मॉडर्न टूल यूजेस है. तो जो कोर्स आउटकम 1 थी फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स की, उसमें कोई मॉडर्न टूल यूजेस का कोई बहुत ज्यादा यूज हम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो उसका मैपिंग जो था वो लो ग्रेड का था, तो हमने उसको 1 दे दिया. सो इन दिस वे वी विल do the mapping, and this is not possible कि let us say ये कोर्स आउटकम 1 है, ये सारे PO से मैप करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे वो हाईली कॉरलेशन था CO1 का POs पर्टिकुलर POs के साथ, वहां हमने वेट 3 दी है. यहाँ पे मीडियम कॉरलेशन था, वहां पे हमने वेट 2 दी है. यहाँ पे लो कॉरलेशन था, वहां पे हमने वेट 1 दी है. सो इन द सेम वे
from your understanding about the subject, you will do the CO/PO mapping. Similarly, हमने CO2 के लिए मैपिंग की है PO के साथ. Similarly, CO3, CO4 and CO5 की. Right. So after doing this mapping, CO/PO mapping process is very cumbersome process, and one senior teacher along with the other colleagues has to sit in the conference room, and then after opening up the syllabi content of the particular subject and the course outcome in a collaborative way, he has to do the mapping of the particular CO with the particular PO, right? And at the end, when any accreditation team will come, that senior teacher has to defend that why I have mapped course outcome 1 with program outcome 1. And if asked by the expert, that senior teacher need to defend that why he has mapped the CO1 with PO1 100%. He has to show the proofs also. ठीक है कि उसने ये कंटेंट पढ़ाया, उसके करस्पॉन्डिंग ये उसने जो मिड सेमेस्टर टेस्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा, ये असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछा. सो इन दैट वे दिस इज वेरी मच रेलेवेंट, राइट? सो हैपहैजर्ड वे में नहीं करना, ठीक है? So if you will do the CO/PO mapping in a haphazard way, that will land you into a big trouble later on. So now let us say how to calculate the CO attainment. So यहाँ पे आप चेक करें, ये एक तरह का रिकॉर्ड है पूरी क्लास का, मैंने मेंटेन किया है, एक एग्जांपल के साथ मैं शो कर रहा हूँ. लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ 1 2 3 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के UIDs हैं, 60 तक हैं, राइट? ऑन एक्स एक्सिस यू कैन से करस्पॉन्डिंग टू CO1 की बात कर रहे हैं सिर्फ हम. CO1 के करस्पॉन्डिंग हमने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन सेट किया, प्रैक्टिकल MST में 5 नंबर का क्वेश्चन सेट किया, प्रैक्टिकल वर्कशीट में हमने 20 मार्क्स का क्वेश्चन सेट किया, डिस्कशन फोरम में हमने 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेट किया, MST 1 में हमने करस्पॉन्डिंग टू CO1 20 मार्क्स का क्वेश्चन डाला, सरप्राइज टेस्ट हमने 6 नंबर का डाला. सो ये सारा टोटल 20 + 5 + 20 + 2 + 20 + 6 टोटल बिकम्स 73, ठीक है? सो 73 मार्क्स का हमने कोर्स आउटकम 1 के करस्पॉन्डिंग जो है पेपर या वेरियस असेसमेंट एलिमेंट्स हमने जो है स्टूडेंट्स को दिए करने के लिए. तो लेट अस से इन द सेम वे व्हाट द स्टूडेंट हैज एक्वायर्ड, 20 में से 18 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में उसने अचीव किए. सिमिलरली फ्रॉम अनदर assessment elements he has obtained the score, and total score he has scored is 65 out of 73, ठीक है? सो आपके यूनिवर्सिटी में या आपके उसमें ये एलिमेंट्स जो हैं ये वेरी भी कर सकते हैं. ये आई हैव जस्ट टेकन द एग्जांपल, ठीक है? तो बच्चे ने पहला जो रोल नंबर 1 है उसने CO1 के करस्पॉन्डिंग उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है कि हमने 73 मार्क्स का टोटल उसको पेपर डाला था, जो असेसमेंट हमने 73 में से की तो उसने 65 स्कोर किया, विच comes out to be 89%. In the same way we will do for the whole class, right? So then we will fix the target corresponding to the subject. This is very important and you need to understand it very thoroughly. So you can see here, मैंने ये ऐसे मेरा एक सब्जेक्ट था फिजिक्स फॉर इंजीनियर, इसमें मैंने जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू है CO टारगेट जो मैंने फिक्स किया वो मैंने 70% ऑफ मार्क्स का फिक्स किया कि 70% ऑफ मार्क्स मेरे जो है वो आने चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द सिलेबस, करस्पॉन्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स feedback and corresponding to the type of students which entered to a particular batch, right? So now this you need to understand. So let us say
मेरी क्लास में फॉर एग्जांपल हमने 60 की क्लास की एग्जांपल ली है, पिछली शीट में मैंने बताया है कि अगर 70% बच्चे जो हैं मोर देन 70% मार्क्स अचीव कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 60 की क्लास है तो 70% स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, 42 स्टूडेंट्स अगर 70% ऑफ द मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो आप लेवल 3 उसको अवार्ड करेंगे। और अगर आपके 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं लेवल 3 का, कि जैसे हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट थे, अगर 70% ऑफ 60 मींस 42 स्टूडेंट्स हमारे 70% से ज्यादा नंबर ले लेते हैं तो हम उसको लेवल 3 एलोकेट करेंगे। सिमिलरली अगर 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे जो है 70% से जो नंबर ज्यादा लेते हैं, 60% का मतलब 36 स्टूडेंट्स हमारे 70% मार्क्स ले लेते हैं तो हम लेवल 2 एलोकेट करेंगे। 50% स्टूडेंट अगर 30 स्टूडेंट 50% ऑफ 60 आई एम टेकिंग, आपकी क्लास में लेटर से वो स्टूडेंट 100 हैं या 70 हैं, अकॉर्डिंगली आप अकॉर्डिंगली फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो 60 स्टूडेंट्स की लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए 50% ऑफ 60 मींस अगर 30 स्टूडेंट्स मेरे 70% नंबर अचीव कर लेते हैं तो मैं उसको लेवल 1 एलोकेट करूंगा। सो नाउ बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी, let us say we are calculating, we have made this table for CO1, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आपने देखा कि CO1 में रोल नंबर 1 के 89% आ गए, ठीक है। तो 70% से ऊपर कितने बच्चों के आए हैं ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट अस से 60 में से 70% से ऊपर जो नंबर हैं वो 42 या 42 से ऊपर बच्चों के आगे हैं, तो हम यहाँ पे देखिए फिर CO1 के करस्पॉन्डिंग हमने उसको 3 वेटेज दे दी, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ये देखिए इस शीट में मैंने बताया कि CO1 के करस्पॉन्डिंग क्या स्कोर बच्चों ने अचीव किया है। पहले बच्चे ने 89% किया है, फिर फोर्थ रोल नंबर ने 74 किया है, सेवंथ रोल नंबर ने 100% कर लिया। तो इस तरीके से हम 60 में से कैलकुलेट कर लेंगे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 70% से ऊपर नंबर लिए, ठीक है। सो अगर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 70% बन जाते हैं, 42 या 42 से ऊपर बच्चे ऐसे निकल आते हैं जिनका 70% से स्कोर ज्यादा है, तो हम उस सीओ के करस्पॉन्डिंग उसको वेट 3 दे देंगे। अगर वो काउंट बनता है बच्चों का 60%, अगर 60% ऑफ द स्टूडेंट कुड अचीव 70% ऑफ द मार्क्स तो हम लेवल 2 दे देंगे। तो इस तरीके से हमने यहां से CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 के करस्पॉन्डिंग CO अटेनमेंट कैलकुलेट कर, ठीक है। इज इट क्लियर? आई थिंक सो, यहां तक क्लियर है। नाउ कमिंग टू द PO अटेनमेंट। सो अब हमारे पास CO अटेनमेंट हमने सीख लिया कि कैसे CO अटेनमेंट हमने की है। देन वी आर हैविंग CO PO मैपिंग टेबल, वो हमने पीछे अभी सीखा था कि CO PO मैपिंग कैसे करनी है। अब CO अटेनमेंट टेबल और CO PO मैपिंग वाले टेबल से हम PO अटेनमेंट कैलकुलेट करेंगे। PO अटेनमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ सी, PO1 में अटेनमेंट की, प्रोग्राम आउटकम 1 की अटेनमेंट कितनी हुई है आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, लेट अस सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CO1 के सामने 3 है तो यू विल मल्टीप्लाई दिस 3 बाय दिस 3, ठीक है। जो CO PO1 के मैपिंग में वेट है 3, सो 3 into 3, similarly 2 into 3, similarly 2 into 3, similarly 3 into 3, similarly 1 into 3। सो वो यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर में लिख लिया, 3 into 3, 2 into 3, 2 into 3, 3 into 3 plus 1 into 3 divided by total weight corresponding to the PO1, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, right? So इसको हमने सॉल्व किया, दिस कम्स आउट टू बी 2.2। सो 2.2 क्या आ गया आपका, PO1 की अटेनमेंट आ गई, राइट।
In the same way, to calculate PO2, again आप ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास PO attainment 2 आ जाएगी, and so on. In this way, you will calculate the PO1, PO2, सारी POs के corresponding आपकी attainment आपके पास आ जाएगी. ठीक है? So this is all about how to calculate CO/PO attainment. So now friends, if you are having any question, you can post in the chat box. So accordingly, I will reply. And if you want that I should make a video on some another topic, that also you need to mention in the chat box. And it is my request to all of you, if you like this video, please share it with your friends and please subscribe to my channel. Thank you very much.